Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 3, that is human health, and today I will deliver its second lecture. And in today's lecture, the students will be able to learn about the spread of diseases and mode of disease transmission. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. Quickly answer this, that what is happening to this boy? He is having a cough. She is having a fever. And the boy is having influenza or flu. So in the previous lecture, we discussed about different diseases. So you will able to understand about different diseases. What is illness? When your body is not fit or having some symptoms of diseases, then it is called an illness. What are the symptoms of common illnesses? For cough, you have coughing, खांसी हो जाती है आपको, and you have sore throat. In fever, we have cough and we have high fever, more than 98 Fahrenheit or 37 degrees centigrade. So my dear students, some ice breaking activity. So what is this? What will happen if you will touch the handful of germs? They will spread. आपको भी लग जाएंगे. And if you will eat such food, what will happen? The flies and mosquitoes, they carry a lot of germs, and if they sit on your food, the germs can enter your body and make you ill. And if you eat from street vendors, तब क्या होगा? बाजार में अगर आप खुला हुआ खाना लेकर खाएंगे तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और जर्म्स होती है which can make you ill. So my dear students, show given pictures to students and ask them to present before class that how disease can be spread by these ways. अब मैंने आपको डिफरेंट तरीके से पिक्चर्स एक्सप्लेन की है. वन बाय वन पॉज द वीडियो एंड स्टूडेंट्स विल कम एंड डिस्कस एंड प्रेजेंट अबाउट ईच पिक्चर. Very good. I hope you have enjoyed the activity. Let's move forward. By the end of today's lecture, students will be able to differentiate between contagious diseases and non-contagious diseases and relate the transmission of common communicable diseases like touching, sneezing and coughing to human contact. So my dear students, आज हम contagious और non-contagious diseases के बारे में पढ़ेंगे. इसके अलावा कौन सी diseases communicable होती हैं यानी कि लग जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. Some common diseases. So my dear students, here you can see the spread of diseases is today's lesson. Let's quickly look at the Islamic perspective. Do not curse fever, for it takes away the sins of the sons of the Adam as the furnace remove away from iron. So my dear students, कहते हैं कि एक हदीस है कि बुखार से नहीं घबराना चाहिए क्योंकि ये हमारे गुनाह जो है उसको झाड़ता है, ख़त्म करता है. जब भी इन मुसलमान को कोई तकलीफ़ होती है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह जो हैं उनको कम कर देता है. So my dear students, some pre-reading questions. Do all diseases spread from one person to another or not? No, not all the diseases spread from one person to another. कुछ diseases spread करती हैं, कुछ diseases spread नहीं करती. So spread of diseases. Quickly open page number 41 in your science 4 books. I hope you have opened the book. Now we will start reading. Spread of diseases. It is common to observe that when one person has flu, many others around him or her have become affected after a few days. What do you think? Why? It is because the germs from the affected person spread in surroundings such as in the air and may stick on the other surfaces. When a healthy person touches contaminated surfaces, germs enter his body and the person becomes affected. It is how some of the diseases spread. Such diseases that spread from person to person are called contagious or communicable diseases, such as measles, tuberculosis, hepatitis, polio, COVID-19, etc. So my dear students, एक healthy person को अगर flu है, उसको sneezing हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उससे एक healthy person को कैसे जो है वो बीमारी लग सकती है. या आपने नोट किया होगा कि अगर घर में किसी एक को फ्लू होता है तो सबको फ्लू हो जाता है. How is it possible? This is possible because when a
unhealthy person touches a surface like a table or a pen or a pencil, when the healthy person touches the same surface, the germs transfer from that surface to the healthy person. और इसी तरीके से आप बीमार हो जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि बार बार हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, अपने हाथों को रिपीटेडली वॉश करें, मास्क पहने। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो जरासीम है या जर्म्स हैं वो हवा में भी होते हैं, विच कैन एंटर फ्रॉम आवर नोज व्हेन वी ब्रीथ। और कुछ जो डिजीजेज होती हैं वो स्प्रेड होती हैं, उनको कंटेजियस या कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है, और जो स्प्रेड नहीं होती उनको नॉन कम्युनिकेबल या नॉन कंटेजियस डिजीजेस कहा जाता है। कुछ जो स्प्रेड होने वाली डिजीजेज हैं, कुछ कंटेजियस डिजीजेज हैं या कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके। उनके नाम है मीजल्स, जिसे खसरा कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, हेपेटाइटिस, पोलियो एंड कोविड-19। ये डिजीजेस कंटेजियस हैं और ये एक दूसरे से लग जाती हैं। नाउ not all diseases spread in the same way, person to person. The diseases that do not spread from one person to another person are called non-contagious diseases, such as cancer, diabetes, etc. Such diseases are not mostly caused by germs. Germs cause contagious diseases. The transmission of germ means transmission of diseases, either directly or indirectly. Here are some common germ transmission modes. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो डिजीजेज आपको नहीं लगती, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफर नहीं होती, ऐसी डिजीजेज को नॉन कंटेजियस डिजीजेज कहा जाता है। और इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ एंड कैंसर। ये डिजीजेज नहीं लगती और ये डिजीजेज जर्म्स की वजह से कॉज नहीं होती। कंटेजियस डिजीजेज जो हैं, या तो वो फ्रॉम आपको अनहेल्दी पर्सन से लगती हैं, या इसका कोई इनडायरेक्ट मोड होता है, जैसे कि अगर एक अनहेल्दी पर्सन ने इस बॉटल को टच किया एंड इफ आई एम अ हेल्दी पर्सन आई विल टच इट अगेन, तो आई मे गेट इल। सो दिस इज हाउ germs transfer and this is called mode of transmission of germs. So now we will discuss about different modes of transmission of germs. Here, number 8, touching and sneezing. On the picture you can see that oral transmission of flu. कोविड-19 में कैसे होता था कि जब when we breathe in the air, जब हम सांस लेते थे और वहाँ पे अगर जरासीम मौजूद हैं तो हमारे सांस के साथ हमारे लंग्स में जाते थे और इस तरीके से हम बीमार हो सकते थे। So sneezing and coughing, when an infected person cough or sneezes, a spray of droplets containing germs spread in the air, just like this. Healthy person inhale contaminated air and becomes affected. Diseases like flu, COVID-19, hepatitis A, tuberculosis, measles, etc. spread through sneezing and coughing. So my dear students, मुझे यहाँ पे एक वाक़या याद आया कि I had measles a few years back and one of my students had measles और उसको शायद पता नहीं था और वो स्कूल आ गया और मुझे भी नहीं पता था कि उसको मीजल्स है। अ डे और टू आफ्टर अ फ्यू डेज मुझे पता चला कि उसको मीजल्स हो गए और एंड देन ही वाज एट हिज होम। उसने बिल्कुल टोटली जो है वो अपने आप को जो है वो सेपरेट कर लिया था सबसे। लेकिन आफ्टर अ फ्यू डेज आई स्टार्टेड हैविंग कफिंग, हाई फीवर एंड देन आई हैड स्मॉल रेड स्पॉट्स ऑल ओवर माई बॉडी and then I knew that I had measles. So this is how the germs spread from person to person. Next is touching. Some germs can live on different objects. When a healthy person touches infected surfaces and then touches his eyes, nose, or eats with contaminated hands, germs enter into his body and become affected. So my dear students, पहले हमने पढ़ा कि हवा में कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं, जर्म्स उनके अंदर होते हैं, वो हमारे सांस के साथ अंदर जाते हैं। कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट सर्फेसेस के ऊपर भी होते हैं और अगर आप उनको टच करेंगे और उसके बाद उन्हीं डर्टी हैंड्स से जो है आप खाना खा लेंगे या पानी पी लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अंदर जो है आपकी बॉडी में जर्म्स ट्रांसफर हो जाएंगे एंड दे कैन मेक यू इल। Many illnesses and diseases are transmitted through contact by touching the infected places. Diseases like common cold, pink eye, hepatitis, measles, etc. spread this way. So when you touch different surfaces which are touched by an affected person, यानी कि किसी unhealthy या affected person ने उनको touch किया है and then you touch the same surface, इस तरीके से आपको germs जो है आपकी body में transfer हो सकते हैं। और बहुत सी
कंटेजियस डिजीजेज ऐसी हैं जो कि टचिंग डिफरेंट टचेस सर्फेसेस को टच करने से ही ट्रांसफर हो जाती हैं या ट्रांसमिट हो जाती हैं. नंबर सी, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. Sometimes individuals become affected even in absence of affected person. Such is the case of diarrhea. The reason is use contaminated food or water. So my dear students, कुछ diseases ऐसी होती हैं जो कि affected person आपके पास नहीं होता, फिर भी आपको जो है वो disease जो है वो लग जाती है. How is that possible? That if you eat contaminated food or water, आप कोई ऐसा खाना जिसके अंदर वो germs present है, वो खाना या पानी पी लेंगे, तो most probably you can get ill. So diseases, there are two types of diseases, contagious जो कि आपको लग जाती हैं and non-contagious diseases. The examples of contagious diseases are measles, polio, COVID-19, TB and hepatitis. Whereas the examples of non-contagious diseases are cancer and diabetes. So contagious diseases are like coughing, and if the healthy person comes near him, he can have the cough. Measles, they also are contagious. TB, it is also contagious. Polio, it is also contagious. And COVID-19, it is also a contagious disease. They transfer from unhealthy person to the healthy person. So non-contagious diseases are like, they do not affect the a healthy person. यानी कि if he is ill, तो it will not affect the healthy person, he will remain healthy. So ऐसी diseases जो होती हैं वो non-contagious होती हैं, जो आपको नहीं लगती. Cancer and diabetes, these are the non-contagious diseases. Examples of heart problems, these are also non-contagious. BP problems, blood pressure problems, these are all non-contagious diseases. Sneezing and coughing, इनके modes of transmission क्या होते हैं? जब आप ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इनके थ्रू जो है वो हवा में जाते हैं एंड दे मेक यू इल, टचिंग से भी जाते हैं. इसके अलावा इनडायरेक्टली भी ये आपके अंदर जो है वो चले जाते हैं एंड दे कैन मेक यू इल. और इनडायरेक्ट मेथड क्या है? व्हेन यू ईट कंटामिनेटेड फूड और वाटर, so that's how you can get ill, or when you are bitten by different mosquitoes or flies. So now is the time for an activity. Visit your kitchen, school, canteen and identify hazards that may cause diseases. Prepare a list and discuss it with your teacher so that the school kitchen can be made risk free. So my dear students, अब आपको करना क्या है कि आपको अपने स्कूल में की कैंटीन में या घर के किचन में जाके कोई भी ऐसी हैजर्डस चीज़ या अनहेल्दी चीज़ जो आप देखें जिससे डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, उनको जो है वो आपने नोट डाउन करना है एंड देन कंप्लेंट टू योर पेरेंट्स और योर टीचर्स, और उसके बाद ताकि जो है वो चीज़ें कैंटीन से या किचन से ख़त्म की जा सकें. जैसे कि अनहेल्दी फूड, ओपन फूड, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड विद डर्टी हैंड्स, इस तरह की चीज़ों को आपने नोट डाउन करना है. So now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by a teacher. Classify the actions below as ways that cause spread of the diseases or as ways that help stop the spread of diseases. So my dear students, यहाँ आपको spreading and precaution prevention आपको different दो columns नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको sharing food, coughing, sneezing, staying home, wearing mask. आपको इनमें से वो हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ जर्म्स हैं, जैसे कि शेयरिंग फूड, और या प्रिवेंटिंग है जैसे कि स्टे एट होम. सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई द habits into two columns. Next is types of reservoirs. So here are different reservoirs given. You have to name each. So human reservoir, animal reservoir, insect reservoir, water reservoir, food reservoir, soil reservoir, right under the given topic. Okay. So you will submit it to your teacher and then we will move forward towards evaluation. Which type of diseases can be transmitted? COVID-19, polio, hepatitis, TB, they can be transmitted easily and they are called contagious. What type of food can cause infections? Contaminated food and water can cause infections. So quickly note down your homework. You will do question number 2 from section B and question number 1 from section C.
From section C, you will do question number 1, and from section B, you will do question number 2 in your notebooks. So this is your homework. It is given on page number 50. And now we will move forward towards next. There is also another homework, which is MCQ 3 and 4. This is given on page number 49. 3 and 4 MCQ. You will do this in your homework, and then we will move forward towards the wrap up. What we have learned today we learned that diseases are of types by mode of transmission, यानी कि different modes of transmission की वजह से हम diseases को categorize करते हैं. Contagious diseases transmit from one person to another. Non-contagious diseases do not transmit. And mode of transmission of diseases are coughing, sneezing, touching, contaminated surfaces, contaminated food or water. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. बीमारियों से अपने आप को बचाएं. बार-बार हाथ धोएं, मास्क पहने. And if you are ill, go see a doctor and stay at home. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much. And